अपना हुआ क्या? प्रॉब्लम नंबर 17। चलिए यहाँ पर देखिएगा मैडम, आपकी मार्कर ना एक ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलो 17 कंसेप्ट पता है सभी को, इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह सब कुछ लिखा हमने, अब तो प्रैक्टिस ही बाकी है। PS be the median of the triangle with vertices PQR, ठीक है। So let us draw the triangle PQR. P है 2, 2, Q 6, -1 और 7, 3. Equation of line passing through 1, -1. 1, -1 कहीं भी हो सकता है. Suppose point is A and parallel to PS. We draw PS median. और आपको इसका इक्वेशन चाहिए line passing through A parallel to PS. Now point on the required line is known, which is taken as x1, y1. तो ये हो गया बच्चों आपका x1, y1. For the equation of line, what is required further? Slope of a line. When the two lines are parallel, slopes are equal. It means slope of PS is equal to slope of line. मतलब हमारा पूरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? In finding slope of PS, right? But where is S? P known है, S तो unknown है. Yes, S is midpoint of QR because PS is a median. We apply midpoint formula. X1 plus X2 plus upon 2, y1 plus y2 upon 2, 13 by 2, 1. Right? Now we find slope of PS using by 2 points for the slope. So now slope of PS is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Right? आप कुछ भी लो, any one is x1 y1, other is x2 y2. जैसे आपकी सोच वैसे आप ले लो. y2 minus y1, x2 minus x1. Is it okay? Solve it. 1 upon 4 minus 9 by 2. Here we got 2 by 9. Calculation देख लो. 2 by 9. तो slope of required line is also 2 by 9 with negative sign. ये parallel ही है. So slope of a line is m equals to minus 2 by 9. ठीक. अब बता दो इक्वेशन ऑफ लाइन. y minus y1 equals to m into x minus x1. तो y minus y1 slope x minus x1 cross multiplying opening of the bracket to x plus 9y plus 7. B option is right.
डी ऑप्शन। Done. Now let us move to problem number 19. हो गया बेटा? बाकी है कोई? नहीं ना? One side of a rectangle lies along the line. अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. Let us draw the rectangle. One side of the line along one side of the rectangle is along the line 4x plus 7y plus 5 equal to 0. ABCD is a rectangle. Two vertices of a rectangle are -3 1 or 1 1. Equations of other three sides. अब आप देख लो ये दो वर्टेसेस कौन से हैं? ABCD 4 में से कौन? पहले देखते हैं हम. अच्छा, -3 1 substitute here. Whether this point is going to satisfy the equation or not. क्या ये पॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? इफ यस इट इज ऑन द लाइन, इफ नो नॉट ऑन द लाइन. राइट, चेक कर लो फिर. x की वैल्यू -3 रखिए, y की वैल्यू 1, यस 0. इट मीन्स -3 1 इज ऑन द लाइन. आइदर ए और बी, दो में से कोई भी हो सकता है. -3 1. अब 1 1 देख लो. 1 1 once again substitute in the line. Examine whether it is becoming 0 or not. 0 आंसर आता क्या? For 1 1 4 plus 7 plus 5 कहाँ से 0 आएगा? 0 आने के लिए कम से कम एक नेगेटिव चाहिए. यहाँ तो 3 3 पॉजिटिव है, तो 0 विल बी फार अवे फ्रॉम दिस. तो रिमेंबर 1 1 इज नॉट ऑन द लाइन, मतलब B इज नॉट 1 1. राइट, इसका मतलब 1 1 ये दो में से एक है. अब D और C, चलो पहले D देख लेते हैं, चेक करते हैं ना. DA is perpendicular to line. It means if you find their product, find their slopes and take the product, it should be -1. If you knew the condition, when the two lines are perpendicular, product of the slopes become -1. चलो सबसे पहले बताते slope of given line. Slope of given line -b upon a. राइट, अब स्लोप ऑफ AD बताओ. AD y2 minus y1 x2 minus x1 0. दोनों का प्रोडक्ट -1 आने का कोई चांस नहीं है. इट मीन्स B is not 1 1, C is 1. Right. So here given two vertices are the opposite vertices of diagonal. ठीक है, चलो अब बनाओ इक्वेशन ऑफ CD. आपको चारों इक्वेशन बनाने, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, मतलब 3 ही बनाने. अब बता दो व्हाट इज स्लोप ऑफ DC. कौन बता सकता है? वही रहेगा, -4/7. ओके, सो पहले निकालते इक्वेशन ऑफ DC. y - y1 m
x माइनस x1 x1 y1 ऑलरेडी है 1 1, स्लोप ऑलरेडी निकाल चुके -4/7, जो प्रॉब्लम में ही है। बचा क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सा विल पावर, y माइनस y1 m x माइनस x1, isn't it? Solve it. We write 7y equal to, bring to one side, minus become plus, ये पहला हो गया 4x 7y minus 11 equal to 0। अब बताओ व्हाट इज स्लोप ऑफ BC? स्लोप ऑफ BC it is perpendicular to given line. Okay, and when the lines are perpendicular, product become -1. मतलब one slope of one of the line is negative reciprocal of second line। और एक नंबर समझो 4 है, by which quantity will you multiply 4 to get -1? किससे मल्टीप्लाई करोगे? Then only product become -1. If the one number is -2/5, by which quantity will you multiply to get -1? 5/2. If the slope of one line is -2/5, you will say slope of second line is 5/2. If the slope of one line is 4, slope of second line become -1/4. Same logic अब apply करो। Slope of AB is known to you. What is slope of BC? 7/4 आता, 7/4, राइट। अब बताओ इक्वेशन ऑफ BC। पॉइंट ऑलरेडी है 1 1 दिख रहा है, स्लोप भी है, सब कुछ अपने साथ है। बचा क्या है? थोड़ी सी एनर्जी, y माइनस y1 m x माइनस x1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, bring to one side 7x minus 4y minus 7 and minus of -4। तो कोई दो ऑप्शन जिसमें कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर भी थर्ड हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then one equation is remaining, AD. What will you do for it? AD के लिए क्या करोगे? बस वही काम करोगे, पहले पॉइंट, उसके बाद स्लोप। इज पॉइंट अवेलेबल ऑन AD? आंसर इज यस, पॉइंट इज अवेलेबल। ए पॉइंट हमें पता है। व्हाट इज स्लोप ऑफ AD? कौन बताएगा? कौन बनेगा शहंशाह? बताओ स्लोप ऑफ AD। वही रहेगा, BC एंड AD बोथ आर पैरेलल। तो स्लोप ऑफ BC अगर ये है 7/4, तो क्या AD का स्लोप 14/13 होगा क्या? रिमेन सेम। नाउ इक्वेशन ऑफ AD, y minus y1 स्लोप x minus x1, स्लोप यही लिखा आपने 7/4। बस सॉल्व इट। So 7x minus 4y minus 25 equal to 0।
+25 होगा ना जी, +25 आएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेवन एक्स माइनस 4y -3, ये आंसर है क्या? नॉन ऑफ दिस आएगा बिकॉज हमें लगने रहेंगे 7x माइनस 4y प्लस 3। हाँ, एक 7x माइनस 4y प्लस 3, 7x माइनस 4y हाँ, बी आंसर इज करेक्ट। बी नहीं, ए आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो प्रॉब्लम नंबर 24। चोट पे है मोड़ और आप सॉल्व करें प्रॉब्लम 24। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point -3, 5। लो ये लाइन passing through -3, 5 and perpendicular to the line through 1, 0, -4, 1। Yes, you have to find equation of line L which is perpendicular to AB and passing through -3, 5। बस आप स्लोप बता दो मुझे, स्लोप ऑफ AB बता दो। व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? हाँ, y2 minus y1 x2 minus x1 -1/5। What is the slope of perpendicular line? We may represent by m 5। How to get it वो आप बता चुके हैं। Now this required line is passing through -3, 5। Get the equation quickly। The equation is कि सब कुछ तो है, अभी स्लोप भी है, पॉइंट भी है, बचा क्या? y minus y1 m x minus x1 5x plus 15 5x minus y plus 20 equal to 0। विद्या equation of line to the intersection of lines x equal to 0, y equal to 0 and through the point 2, 2। ये कल लिख के दिया था आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन to the intersection of
two lines, एक L1 equal to 0 and second L2 equal to 0 is L1 plus lambda L2 equal to 0. यह concept beyond the line through intersection of two lines. L1 मतलब equation of line when RHS is 0. The entire LHS is taken as L1. अब देखो पहले इक्वेशन में LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड x है x, तो L1 become x. In the second equation, what is left hand side? That is taken as L2. So this is the line passing through intersection of two lines. But problem है लैम्बडा कैसे निकालना, तो उसके लिए कंडीशन दी जाएगी. कंडीशंस अलग अलग हो सकती है. In this problem condition is line is passing through 2. It means you can substitute x2 and y2. Find out value of lambda. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है. बता दो व्हाट इज लैम्बडा. Yes, in the end substitute in 1. ये वैल्यू इक्वेशन 1 में ही रखना है. x minus y equal to 0. This is the equation of line. इस टाइप का एक हम लेने वाले हैं 27 नंबर. 27 बाकी क्या क्लियर. इसमें भी ना सेम लॉजिक अप्लाई होगा. Equation of line passing through the intersection of two lines. 2x plus y minus 4 equal to 0. x minus 3y plus 5 0. And lying at a distance root 5 from the origin. तो यहाँ पे लेना L1 पहले. दिस इज L2. ओके, पहले वो लिख लेते इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 0 एंड L2 0. लाइन बिकम substitute L1 L2, solve it and get the equation in general form. मतलब ये ऐसे फॉर्म में लिखा. कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. लुक व्हाट इज L1. चिल्ड्रन L1 मीन्स कंप्लीट लेफ्ट साइड व्हेन राइट साइड इज 0. नाउ ओपन द ब्रैकेट. टेकिंग कॉमन, यहां से x कॉमन आएगा, फिर y कॉमन, लास्ट ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऐसे. ओके, यू कैन सी दिस इज ऑफ द फॉर्म ax by plus c equal to 0.
The distance of this line from origin is root 5. मतलब distance of line number 1 from the origin is square root of 5. This is the condition applicable to get lambda. लैम्डा निकालने के लिए कुछ तो कंडीशन देनी होती है ना, जैसे पहले प्रॉब्लम में पॉइंट दिया था, इट इज दैट वाज ऑन द लाइन, इसमें डिस्टेंस दिया है, तो नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला फॉर, कल लिख के दिया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन. देख लो, लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ लाइन हियर. ठीक है, बताओ फॉर्मूला पीएम के लिए. पीएम, अब यहाँ ओएम है, ओएम इज रूट 5 मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, वैल्यू ऑफ y इज 0 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Then now solve it. 0 0 अपॉन रूट. अभी सिंप्लीफिकेशन वर्क है भाई, इसका स्क्वायर पता है क्या आएगा, इफ यू मेक द स्क्वायर लो आफ्टर स्क्वायरिंग and now just you have to solve the equation for lambda. अब आप अपनी एनर्जी एक्सपेंशन करने में लगाओ, सिंप्लीफाई करने में, मेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स. अच्छा याद हुआ, चलो कोई बात नहीं, इतना लिख दो पहले. Now we are going to make square of both the sides. On squaring, remove the square root sign from denominator. Addition of like terms, कुछ addition हो सकती है. 10 lambda square minus 2 lambda plus 5 equal to 5. After squaring, expanding y से b cross multiply plus 25 ready. Bring to right side 50 minus 25 minus 10 plus 40 25 minus 16 9. Now we are going to find the factors of 25 into 9. whose sum is 30. 15 and 50.
ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर ही है. दिस क्वाड्रेटिक इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ. Now take the square root. Solve for lambda. ठीक है. And in the end just put this value in above equation. ऊपर लिखा है ना L1 plus lambda L2, बस उसमें रख दो और बता दो क्या आने वाला है. हाँ, इसमें सिंप्लीफिकेशन वर्क है तो आप केयरफुली कर. हाँ, आप आराम से इक्वेशन क्या आएगा अभी 2x plus y minus 4 इधर लिखना पड़ेगा. Then so from equation 1 ऊपर आपने लिखा था L1 plus lambda L2 ना, उसमें रख देते. तो L1 है 2x plus y minus 4 lambda times L2 and lambda is minus 3 by 5. बस ये सॉल्व करोगे you will get equation of required line. Multiply by 5 each one. Open the bracket. Multiply by 5 and removal of the bracket. 7x 14y minus 35 इसमें 7x तो नहीं दिख रहा मुझे. ऑप्शन में तो 7x सही नहीं. एक बार आप लोग की गलती नहीं होगी. हाँ, डिवाइड बाय 7 होता ना. डिवाइड बाय 7 था नहीं क्या. x plus 2y minus 5 x plus 2y minus 5 मतलब B ऑप्शन इज करेक्ट. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? B ऑप्शन आएगा बच्चों करेक्ट. ठीक, मैं आपको क्लियर बता दूं करना क्या है और आप फिर ट्राई कर लेना. प्रॉब्लम नंबर 30 हो गया सभी का. 30. Let us see the diagram. I will explain what to do. You will try it. Equations of diagonals of a square formed by the lines. पहली लाइन है x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 1. मतलब टोटल 4 लाइन्स है. Look, this is x equal to 0, यह है y equal to 0. x equal to 0 मतलब y axis, y equal to 0 means x axis. x equal to 1 is a vertical line. x equal to 1 is vertical line crossing x axis at 1.
and y equal to 1 is horizontal line crossing y axis at 1. ठीक है, you can see square is formed. दिख रहा है? चलो, write down all the 4 vertices. पहला ए बताओ, 0 0, हाँ ओरिजिन. बी बताओ 1,0. पहले डी बता दो एंड देन सी. बस. You have to find equations of diagonals. Yes. Using 2 points form. Equal to. Use it to get equations of both the diagonals. पहले AC, पहले AC कोई भी एक x1 y1 x2 y2 और उसके बाद BD के सेम मेथड. ठीक है, ये आपका. बाकी प्रॉब्लम्स हम कल कंटिन्यू करेंगे. चले.